Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Welcome to the lecture 14 of signals and systems. So in our last lecture, we introduced a transform known as Laplace transform. And we observed that there are two aspects of Laplace transform. One is algebraic expression, as a function of S, where S is a complex number. And second part of Laplace transform is what we call as region of convergence, which we abbreviate as ROC. And what is the meaning of region of convergence? Values of S for which Laplace transform is finite, or you can say for which Laplace transform is convergent. So for complete specification of Laplace transform of any signal, we need to find two things. One is the algebraic expression, and second is region of convergence. And then we started talking about some of the properties of region of convergence. And at the end of our last lecture, we covered 4 properties. So today I'm going to continue with the properties of region of convergence, and I will start from property number 5. So we are continuing with the topic, properties of region of convergence. And we are continuing with property number 5. According to property 5 of region of convergence of Laplace transform, if x of t, which is the signal that we are interested in finding its Laplace transform. So if x of t is left side, and if the line real part of S equal to some value, let's call it sigma naught, is in the ROC, then all values of S for which real part of S is less than sigma naught will also be in the region of convergence. Now, this property is very closely related to property number 4 that we covered in our last lecture. And just to bring your attention to that property, according to property number 4 that we have already covered, if x of t is right-sided, and if the line real part of S equal to sigma naught is in the ROC, then all values of S for which real part of S is greater than sigma naught will also be in the ROC. So if you compare property number 4 and property number 5, you will get the concept behind this property. I already explained
the concept behind property number 4. So the same concept you can easily apply to property number 5. The idea is, if you remember, when we talk about convergence of the Laplace transform, so actually convergence is associated with this concept that if you have a signal x of t, and if you multiply this with a value of s equal to sigma naught, okay, and then if you integrate this from minus infinity to plus infinity, this should be less than infinity. Why it's less than infinity? Because we are already saying that this point, this value is included in the ROC. So if it is included, then it means that the Fourier transform of this signal multiplied by this will be less than infinity. So if for this value, we get less than infinity, and then if we select any other value, so let's say you select some other value, let's call it sigma 1. And if this sigma 1 is less than sigma naught, so now all values of s for which real part of s, let's assume sigma 1 is another real part. So if it is less than sigma naught, then for this value as well, we will get this result. It means x of t e power minus sigma 1 t d of t. If you integrate this, you will also get a result less than infinity, which means that this is also included in ROC. Any value, as long as you select some value of sigma, again, you remember this real part of S is sigma because S is a complex number. Real part को हम sigma से denote कर रहे हैं और imaginary part को omega से. And we already covered this part. The region of convergence जो है उसका ताल्लुक सिर्फ इसके साथ. So that is why everywhere हम ये लिख रहे हैं कि real part of S. So according to property number 5, अगर left sided signal हो, now प्रॉपर्टी नंबर 4 में जब मैंने राइट सिग्नल डेफिनेशन की थी उसके हिसाब से क्या डेफिनेशन थी, लेट मी ड्रॉ द सिग्नल सो दैट यू कैन कंपेयर द डिफरेंस. जब हमें प्रॉपर्टी नंबर 4 में राइट साइड सिग्नल की बात की, राइट साइड, सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड राइट साइड सिग्नल. तो अगर राइट साइड सिग्नल को मैं प्लॉट करूं, so right-sided signal is that signal which is initially 0. Then for some value, let's call it t1, the signal becomes non-zero. And then it remains non-zero for the rest of the time. Similarly, अब हम बात कर रहे हैं left-sided signal. So graphically, अगर मैं left-sided signal को draw करूं, so how left-sided signal will look like? Left-sided signal is that signal जो कि initially जो है non-zero, but at some particular value हमारा सिग्नल जो है वो लेट्स से 0. So this is the difference between right-sided signal and left-sided signal. जो प्रॉपर्टी नंबर 5 मैंने एक्सप्लेन की है, ये किस किस्म के सिग्नल पे हम अप्लाई कर सकते हैं? सिग्नल दैट इज लाइक दिस. Let's move on to property number 6. If x of t is two-sided and if the line real part of s equal to sigma naught is in the region of convergence,
then the region of convergence will consist of a strip in the S plane that includes the line real part of S equal to sigma. Now the question is, जब हम two-sided signal की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? So two-sided signal can also be called as infinite signal. It means कि अगर मैं two-sided signal को graphically show करूँगा, it will be something like this. This type of signal exists for all values of time. So it starts from minus infinity and it continues up to plus infinity. So now this is what we call as two-sided signal. अब आप compare कर सकते हैं right-sided signal को, left-sided signal को और now two-sided. इस सिग्नल का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप फाइंड करेंगे और फिर इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की हम बात करेंगे, किस किस्म का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विल कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिप. अब इसको हम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह वैलिडेट करेंगे कि किस तरह के सिग्नल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस स्ट्रिप क्यों होगा. सो व्हाट वी कैन डू इस टू-साइडेड सिग्नल को मैं विजुलाइज कर सकता हूं एज इफ this signal is made up of left-sided signal and right-sided signal. अगर right-sided signal क्या है? Initially zero है, T1 के बाद non-zero हो गया, जबकि left-sided signal initially non-zero है और T2 के बाद ये zero हो गया. तो अगर आप इन दोनों को देखें और आप इस two-sided signal को देखें, अगर मैं एक time select कर दूं, let's say there is some time, let's call it this. एक टाइम मैं अपनी मर्जी से कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स कॉल इट T0. और इस टाइम पे मैं इस सिग्नल को स्प्लिट कर लेता हूँ या सो अप टू T0 माइनस इन्फिनिटी से लेकर T0 जो है ये मेरा लेफ्ट साइडेड सिग्नल बन जाएगा और फिर T0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो मेरा सिग्नल है वो राइट साइडेड सिग्नल बन जाएगा. ठीक है, तो इस सिग्नल को हम स्प्लिट कर लेते हैं. ठीक है, we can choose some arbitrary time T0 and divide x of t, again इसको मैं x of t कर देता हूँ, into the sum of right sided signal, इसको मैं let's call it x sub r, and a left sided signal, जिसको हम कह देते हैं x sub lt. So let me draw this.
तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड सिग्नल है। ये मेरे पास राइट साइड। इफ यू ऐड देम टुगेदर तुम्हारे पास ये सिग्नल आ जाएगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज, ये जो हम टू साइडेड सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ सम ऑफ लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइडेड सिग्नल, इसका हम एडवांटेज क्या ले सकते हैं? नाउ ये जो लेफ्ट साइडेड सिग्नल, इसके बारे में ऑलरेडी हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, और इस तरीके से जो राइट साइडेड सिग्नल के आरओसी के बारे में है ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो मैं दोनों को लिख रहा हूँ। लेट्स अज्यूम कि जो राइट आरओसी है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल के आरओसी के बारे में मैं कह देता हूँ कि इसके आरओसी क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ एस विल बी लेस देन सम वैल्यू जिसको मैं सिग्मा एल कह देता हूँ। और राइट साइडेड सिग्नल का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा उसके बारे में ऑलरेडी हमें पता है कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन सम वैल्यू जिसको मैं सिग्मा आर कहता हूँ। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 5 को देख लें, 4 तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लेफ्ट साइडेड सिग्नल के आरएससी के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि रियल पार्ट ऑफ एस इज लेस देन सम वैल्यू जिसको मैं सिग्मा नॉट कह रहा हूँ। और राइट साइडेड सिग्नल के बारे में प्रॉपर्टी नंबर 4 हम पढ़ चुके हैं, वो अगर आप चेक कर लें इसमें लिखा होगा कि रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन सम वैल्यू जो कि सिग्मा नॉट। उसी के बेस के ऊपर मैं अब ये लिख रहा हूँ। लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस तरह का होगा कि रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन सम वैल्यू जिसको मैं सिग्मा एल कह देता हूँ। और राइट साइडेड के लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन सम वैल्यू गामा आर। अब जो हमारा एक्चुअल सिग्नल है एक्स ऑफ टी, इसके आरओसी क्या होगा, बिकॉज इट इज द एडिशन ऑफ लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइडेड, सो इसका जो आरओसी होगा वो इन दोनों का ओवरलैप के बराबर होगा। सो लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट। ROC of x of t will then be the overlap of these two ROCs. अब इसको मैं ग्राफिकली ड्रॉ करता हूँ, देन इट विल बी क्लियर टू यू। लेफ्ट साइडेड के बारे में पहले देखते हैं। इसका अगर मैं ROC ड्रॉ करूंगा, so this is let's say over S plane, ये आपके पास सिग्मा एक्सिस है और ये आपके पास ज्योमेट्रिक एक्सिस। सो लेट्स अज्यूम कि ये आपके पास वो वैल्यू है जिसको मैं गामा सिग्मा एल कह रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विल बी ऑल वैल्यूज ऑफ रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन। इट मींस कि ये वाला जो सारा रीजन है ये इसका आरओसी हो जाए। दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये कौन सा सिग्नल के लिए है, लेफ्ट साइड। ठीक हो, अब राइट साइडेड सिग्नल के लिए क्या होगा, लेट्स अज्यूम कि ये है आपके पास वो वैल्यू जिसको मैं सिग्मा आर, so what is the region of convergence, all values of s greater than gamma sigma r। ठीक है, तो मैं इसको शेड कर, ये आपके पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया।
अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है, जो हमारा एक्चुअल सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इन दोनों का ओवरलैप हो। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट कर लेता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ओवरलैप रीजन कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो है गेमा एल से लेस है और ये आपके पास गेमा आर से है। तो मैं दोनों को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ये आपके पास सिग्मा आर है, ये आपके पास सिग्मा एल। तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन हमारे पास बन रहा है वो ये वाला, ये दिस इज द ओवरलैप। So this is going to be the ROC of our signal. And now we go back, हमने क्या कहा था, टू साइडेड सिग्नल का ROC क्या होगा, it will consist of a strip. So now this is what we call strip gap. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ओवरलैप, अगर मैंने वर्ड यूज किया कि ओवरलैप होना चाहिए, इस केस में आपने देखा कि मैंने क्या किया हुआ है, गेमा आर की जो वैल्यू है, गेमा आर कैन क्लियरली सी, गेमा आर को मैंने लेस देन गेमा आर, सो लेट मी राइट दिस, मैंने क्या कंसीडर किया हुआ है कि गेमा आर की जो वैल्यू है, सॉरी नॉट गेमा, सिग्मा, सिग्मा आर की जो वैल्यू है इट इज लेस देन गेमा। ये अगर कंडीशन फुलफिल होगी तब जाके ओवरलैप होगा, अदरवाइज ओवरलैप रीजन नहीं होगा। ओवरलैप रीजन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि देयर विल बी नो आरओसी, और नो आरओसी का मतलब ये होगा कि इस सिग्नल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट नहीं करता, विच मींस कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो लेट मी राइट दिस, ये मैं किस लिए लिख रहा हूँ, इट इज नेसेसरी फॉर ओवरलैप। Now before I move to last two properties of region of convergence, इससे रेलिवेंट मैं एक एग्जांपल कर लेता हूँ इस प्रॉपर्टी नंबर 6 से, सो दैट इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन वो क्लियर हो जाएगी। सो एग्जांपल, सिग्नल हमें गिवन है x of t equal to e to the power minus b, b is some constant, and then absolute value of, सिग्नल को अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं, so there are two possibilities depending upon कि ये जो b की वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं दोनों केसेस के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। सो लेट्स प्लॉट दिस सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले केस में मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट्स से कि केस नंबर 1 हमारे पास है कि जो b है यहाँ पे वो ग्रेटर देन 0, विच मीन्स पॉजिटिव। और केस बी में मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो b है वो एक ऐसा नंबर है जो कि लेस देन। तो दोनों केस में एक ग्राफ किस तरह का बनेगा, लेट मी प्लॉट। एक्सपोनेंशियली आपको नजर आ रहा है कि जब b आपके पास पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे जो सिग्नल होगा वो e पावर माइनस समथिंग होगा, इसका मतलब है कि ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होगा। सो लेफ्ट साइड पहले हम इसको पॉजिटिव टाइम के लिए कंसीडर कर लेते हैं। तो पॉजिटिव टाइम के लिए भी इस तरह ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा होगा, और इसी तरीके से नेगेटिव टाइम के लिए भी एक्सपोनेंशियली ये डिके कर, और एट t इक्वल टू 0 जो इसकी वैल्यू होगी वो 1, ठीक है।
दिस इज हाउ दिस सिग्नल विल लुक लाइक फॉर दिस केस। दूसरे केस में क्या होगा, जब b लेस देन 0 होगा, इट मीन b नेगेटिव होगा, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यू विल गेट e प्लस समथिंग। एंड वी ऑलरेडी नो फ्रॉम बेसिक जो हमने एक्सपोनेंशियल सिग्नल को डिटेल में डिस्कस किया था चैप्टर 1 में, वी नो कि जब e प्लस समथिंग होगा इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल। तो अब किस किस्म का सिग्नल होगा, सो एट इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू 1 ही होगी, और फिर ये पॉजिटिव टाइम के लिए सर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा होगा, और इस तरीके से नेगेटिव टाइम के लिए एक्सपोनेंशियली ग्रो कर। So these are two possibilities of this signal. इस केस के लिए it will look like this, and for this case it will look like this. Now we are interested कि ये दोनों पॉसिबल जो सिग्नल्स हमारे पास बन रहे हैं मैथमेटिकली इस तरह, और ग्राफिकली इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। इस सिग्नल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, और फिर इसके साथ एसोसिएटेड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। नाउ इस सिग्नल को अगर आप देखें, इट इज अ टू साइडेड सिग्नल। ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से ये सिग्नल भी आपके पास टू साइडेड सिग्नल है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरे ड्यूरेशन में एक्सटेंड कर रहा है। तो दिस इज अगेन रिलेटेड टू जो प्रॉपर्टी नंबर 6 की हम बात कर रहे थे ना, टू साइडेड। सो नाउ यू हैव वन ए पर्टिकुलर एग्जांपल के ये जो मैथमेटिकली सिग्नल है इट इज काइंड ऑफ अ टू साइडेड। इस सिग्नल को मैं इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो पहले इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इन अ बेटर फॉर्म। मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ कि e पावर माइनस बी टी, मैं t को पॉजिटिव ले रहा हूँ, सो इट मीन्स इसका ताल्लुक यूनिट स्टेप सिग्नल u ऑफ t के साथ हो जाएगा। और फिर के पहले दूसरे केस में मैं t को नेगेटिव ले लेता हूँ, तो आपके पास e प्लस बी टी हो जाएगा, और क्योंकि मैं t को नेगेटिव ले रहा हूँ तो इसको मैं u ऑफ माइनस टी से रिप्रेजेंट। So this signal can be represented as it is made up of this signal plus this signal. ये u of t है, जिसका मतलब है कि 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी, 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी का जो पार्ट है वो इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये माइनस इंफिनिटी से लेकर जो 0 तक सिग्नल है, माइनस इंफिनिटी से 0, इस सिग्नल को हम इस तरह now all we need to do is इसका Laplace transform find करना है। So what we need to do is we can make use of linearity property. इसका Laplace transform find करेंगे, इसका find करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एक्चुअल सिग्नल का Laplace transform हो जाएगा। ठीक है, सो इस किस्म के सिग्नल का Laplace transform ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि e पावर माइनस बी टी u ऑफ t का जो कॉरेस्पॉन्डिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर है वो हो जाएगा 1 ओवर s प्लस b। लास्ट लेक्चर में हम एग्जांपल्स कर चुके हैं, सो यू कैन रेफर बैक, या ऑलरेडी हम एग्जांपल कवर कर चुके हैं। तो मैं इसका डायरेक्टली लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिख रहा हूँ, और इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो होगा रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन माइनस, ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और जो दूसरा सिग्नल है हमारे पास e प्लस बी टी u ऑफ माइनस टी, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय s माइनस b, and the region of convergence will be real part of s less than plus। you can clearly see कि ये अगर हम इस सिग्नल की बात कर रहे हैं u of t का मतलब ये है कि we are only focusing on this। ये इसका मतलब है कि ये सारा सिग्नल यहाँ तक 0 है और फिर ये नॉन 0 है, तो ये you can clearly see कि ये राइट साइडेड सिग्नल हो जाएगा। और राइट साइडेड सिग्नल का आरओसी हमेशा क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन सम नंबर। ये जो सिग्नल है इसको अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा सिग्नल है, इट इज दिस वन, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से 0 में एग्जिस्ट करता है और इसके बाद ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से इस केस में आप देखेंगे ये सिग्नल यहाँ तक होगा फिर ये 0 हो जाएगा, तो ये कौन सा सिग्नल हो जाएगा, लेफ्ट साइडेड। और लेफ्ट साइडेड सिग्नल का आरओसी हमेशा क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन सम नंबर। ये ग्रेटर देन का ताल्लुक राइट साइडेड सिग्नल के साथ है, लेस देन का ताल्लुक जो है वो लेफ्ट साइड के साथ। नाउ दिस इज द Laplace transform of this number plus this number। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे
तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। बट द क्वेश्चन इज इसका आरओसी क्या होगा। इट मीन्स कि अब मैं लिखने जा रहा हूँ कि जो हमारा एक्चुअल सिग्नल है जो कि इसके बराबर है ई पावर माइनस बी एब्सोल्यूट, व्हाट इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर हम ऐड कर लेते हैं, ये 1/s प्लस बी हो जाएगा माइनस 1/s माइनस बी हो जाएगा। बट द क्वेश्चन इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को अगर हम देखें इनका ओवरलैप होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ एंड देन आई विल टेल यू कि ओवरलैप किस सूरत में होगा। सो आई विल से इट शुड बी लेस देन प्लस बी एंड ग्रेटर देन माइनस। नाउ ग्राफिकली इसको हम देख लेते हैं। नाउ बी के बारे में हमने दो बातें की हैं। अगर आप देखें, एक हमने ये बात की बी ग्रेटर देन जीरो है और दूसरा बी लेस। अगर बी पहले इस केस में व्हेन बी इज ग्रेटर देन जीरो इट मींस कि बी एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इस केस में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि बी क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब है कि ये जो आपके पास वैल्यू हो जाएगी इसको मैं कह दूंगा माइनस बी, और इसको मैं क्रॉस कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे इसका आपको नजर आ रहा है कि इसका पोल है, पोल, और ये आपके पास हो जाएगा प्लस। तो अगर ये सिचुएशन है तो माइनस बी यहाँ पे होगा और प्लस बी यहाँ पे होगा, और ये जो है आपके पास वो ओवरलैपिंग रीजन आ जाएगा। अब जो दूसरा केस, जब बी लेस देन जीरो, फिर क्या होगा। इफ यू राइट दिस there will be no overlap. As a result, no region of convergence. As a result, no Laplace transform. It means कि ये जो मैंने केस नंबर बी किया है, इस केस में जो हमारा सिग्नल होगा उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और इसको आप इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस सिग्नल को अगर आप देखिए ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। एज अ रिजल्ट इसका जो जब आप इंटीग्रल लेंगे वो कभी भी फाइनाइट आंसर नहीं आएगा। इसको आप इस तरीके से भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि हमने टू साइडेड सिग्नल की प्रॉपर्टी लिखी हुई थी कि ये जो आप ग्राफ देखिए, नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि सिग्मा आर लेस देन गैमा एल होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ओवरलैप नहीं होगा। इसी को आप यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं इसको क्विकली ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले केस में हम क्या कह रहे थे, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखें इस सिग्नल के लिए क्या है कि रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी ग्रेटर देन माइनस बी, माइनस, ठीक है। अब बी क्या है, बी के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि बी क्या चीज है, लेस देन सी। इसका मतलब कि बी नेगेटिव नंबर, जब बी नेगेटिव नंबर हो गया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब है कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन प्लस बी, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन प्लस बी। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे होगा बी और इसके राइट साइड पे इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक हो गया। ये मैं कौन से सिग्नल की बात कर रहा हूँ, इसके लिए बात कर रहा हूँ। इसके लिए क्या होगा,
रियल पार्ट ऑफ एस इज लेस देन प्लस बी, लेकिन बी क्या चीज है, बी क्या है, नेगेटिव है, तो रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी लेस देन माइनस बी। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मैं किस तरह शो करूँ, इसके लिए मैं शो करूंगा यहाँ पे कर सकते हैं, सिग्मा हो गया, तो रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन दिस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे होगा। तो नाउ यू कैन सी, क्या इनका कोई और लैप आपको नजर आ रहा है, इसको देखें और इन दोनों का कोई और लैप होगा, नो ओवरलैप, विच इज एज अ रिजल्ट मैंने इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस केस में जो दो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बन रहे हैं लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए और राइट साइडेड सिग्नल के लिए, यू कैन क्लियरली सी कि उनमें कोई भी आपको रीजन ओवरलैप नजर नहीं आ रहा। जब ओवरलैप नहीं होगा इसका मतलब है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ना होने का मतलब ये है कि इस केस में सिग्नल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ कौन से केस में एग्जिस्ट कर रहा है, इस केस में, क्योंकि इस केस में आपको ओवरलैप हो, ये ओवरलैप। Let's continue this discussion about properties of region of convergence in the next section.